Assalamu alaikum students. Today we are starting S1 paper. This is 970952 October November 23 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पेपर 11:02 पर और देखते हैं अब कितनी देर में इस पेपर को हम कंप्लीट कर सकेंगे. दिस इज द स्टार्टिंग टाइम. नाउ स्टार्ट करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर वन. The question here is a competitor in a throwing event has 3 attempts to throw a ball as far as possible. The random variable x denotes the number throws that exceed 30 meters. The probability distribution table for x is shown below. Given that expected value is 1.1, find the value of P and the value of R. Now, अब आप देखिए, अगर P and R की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए वी मस्ट हैव टू इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन तो मैं ये बना रहा हूं, समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज in any experiment is equal to 1. So now it will be 0.4 plus P, 0.4 plus P plus R plus 0.15 equals to 1. So according to this, P plus R equals to 0.45. According to this, P plus R equals to 0.45. Summation of all the probabilities equals to 1 से हमने एक इक्वेशन बना ली. Second equation, expected value is equals to 1.1. And how can we calculate the expected value? X multiplied by probability of X. Summation of X multiplied by probability of X is equals to 1.1 given in the question. So now, up 0 into 1.4 plus 1 into P is P plus 2 into R is 2R plus 3 into 3 into 0.15 is 0.45 equals to 1.1. So according to this, P plus 2R equals to 0.65. This is our second equation. दोनों equations को अब हम करेंगे simultaneously solve. दोनों equations को अब simultaneously solve किया जाएगा. From this, the value of P is 0.45 minus R. Equation 2 में रखते हैं 0.45 minus R plus 2R equals to 0.65. According to this, the value of R is 0.2. And if R is 0.2, then P will be, अगर हम P equals to 0.45 minus R में रखते हैं 0.2 को, तो P will be 0.25. So these are the values of P and Q. This is question number 1, part A. Now part B. Find the numerical value of variance. अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों वेरिएंस. हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंस? वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैं यहीं पर लिख रहा हूं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस? द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इज EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर. फॉर दिस वी हैव टू मेक सम कॉलम्स बनाते हैं. X आपको गिवन दिया गया which is 0, 1, 2, 3. X स्क्वायर का एक कॉलम बनाइए which is equals to 0, 1, 4, 9. अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी का कॉलम. The column of probability is 0.4. P की वैल्यू आप यहां पर लिख दीजिए 0.25. R की वैल्यू आप यहां लिख दीजिए which is 0.2 और 0.15. This is the column of probability. After making the column of probability, अब हमें कैलकुलेट करना है EX
how to calculate EX? EX is X into probability of X. X into probability of X डायरेक्टली कैलकुलेटर से करके आप सम नीचे लिख दीजिए. इट्स नॉट नेसेसरी टू शो ऑल द वैल्यूज. तो अगर x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x करते हुए सम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1.1, जो कि आपके पास पहले भी गिवन था. ex इज 1.1. एंड नाउ ex स्क्वायर्ड क्या होगा? x स्क्वायर्ड को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करवाइए और सम कर दीजिए. तो ex स्क्वायर्ड का जो सम आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द कैलकुलेटर, इट इज 2.4. Now we have to calculate the variance. So the variance equals to EX square 2.4 minus EX ka whole square 1.1 whole square. So according to this, by using our calculator, what is the value of variance? The value of variance is 1.19. This is the second part of question number 1. This is the second part of question number 1, part B. Now, after that, what we have in the next question? The next question is here. George has a fair five-sided spinner. एक spinner है हमारे पास five-sided with sides labeled 1, 2, 3, 4, 5. He spins the spinner and notes the number on the side on which the spinner lands. Find the probability that it takes fewer than 7 spins for George to obtain a 5. अब आप देखिए, this is the question of geometric. This is the question of geometric distribution. हमसे कहा गया find out the probability that fewer than 7, x is less than 7 की probability हमें calculate करना है. Geometric progression में हमारे पास एक formula है, probability of x less than equals to x is equals to 1 minus q power x. यहां पर हमसे पूछा गया ओनली लेस देन 7, तो हम इसको कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 7 इज ऑल्सो इक्वल टू लेस देन इक्वल्स टू 6. हमने इसमें कन्वर्ट किया 1 माइनस क्यू. अब आप देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स फीवर देन 7 स्पिन्स फॉर जॉर्ज टू ऑब्टेन अ 5. 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 बिकॉज वी हैव 5 ऑप्शंस. तो 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/5. तो Q की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास? 4/5. Q की वैल्यू क्या आ गई? 4/5. तो आई एम राइटिंग हियर 4/5 power 6. According to this, the result from the calculator is 0.738. This is question number 2, part A, the question of geometric progression. After that, part B. Part B में कहा गया George spins the spinner 10 times. Number of times आपको बता दिया गया. तो now it is a question of binomial. In which n is 10. Probability of success is 1/5 and probability of failure is 4/5. आपसे कहा गया find the probability that he obtains a 5 more than 4 times but fewer than 8 times. तो हम लिख सकते हैं probability of x more than 4 क्या हुआ? 5. और more than 4 क्या हुआ? 6. और more than 4 क्या हुआ? 7. 8 तक नहीं जाएंगे क्योंकि इन्होंने कहा है fewer than 8. Therefore, by using the formula, and what is the formula? The formula is, for finding out the probability in binomial, the formula is NCX P power x Q power n minus x. This we have to use for finding out all the probabilities. So here, first n is 10, C 5. What is P? P is 1/5 power 5. And what is Q? 4/5 power 5. Plus 10C6. What is P? 1/5 power 6. What is Q? 4/5 power 10 minus 6, 4. Plus 10C7. What is P? 1/5 power 7.
And what is Q? 4 upon 5. Power 10 minus 7, it is 3. So finally, the result is 0.0327. The result is 0.0327. This is part B of the question. इसको part B की जगह पर हम paste कर देते हैं. Now, this is part B. After that, what we have in question number 3? In question number 3 is a factory produces a certain type of electrical component. A certain type of electrical component. It is known that 15% of the component produced are faulty. A random sample of 200 components is chosen. Use an approximation. Use an approximation. जब भी बच्चों approximation की बात हो, use an approximation to find the probability that more than 40 of these components are faulty. जब भी approximation की बात हो, तो it means it is a question of normal distribution. और अब आप देखिए normal distribution में we have to work on a normal curve. We have to work on a normal curve. In this, आपसे क्या कहा गया? What is the probability of success? 15%. तो probability of success कितना हो गया? 0.15. 0.15. N हमारे पास कितना है? N हमारे पास है 200. तो अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NP. और अकॉर्डिंग टू दिस द मीन वैल्यू इज 30. और अगर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ NPQ, क्योंकि हम बायनोमियल की हेल्प लेते हुए मीन और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं. So it will be 5.05. What is the value of Q? The value of Q is 1 minus 0.15. It will be 0.85. अब आइए वर्किंग आगे करते हैं. हमसे क्या कहा गया? यूज एन अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 40 ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर फॉल्टी. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डाटा? मीन ऑफ दिस डाटा हम कैलकुलेट कर चुके. मीन ऑफ द डाटा इज 30 and we need to calculate the probability which is more than 40. Which is more than 40. अब आप देखिए जब भी अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन होगा और अगर हमें मोर देन 40 कैलकुलेट करना है तो हम इसमें 40.5 यूज करते हैं. 40.5 यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी करेक्शन. Now we have to calculate the probability which is more than 40.5. It means we have to calculate the probability of this area. Now, as the mean is not 0, so it means these are the values of x. First, we have to calculate the value of z. According to z, mean is always 0. And we have to convert this 40.5 in the value of z by using the formula. And the formula is z equals to x minus mean upon standard deviation. By using this formula, we can say that it will be 40.5 minus mean upon standard deviation is 5.05. So according to this, the value is 2.079. अब आप देखिए, we need to calculate the probability more than 2.079. So now, अब हम लिख सकते हैं, we have to calculate the probability more than 2.079. और आपको मालूम है कि जब भी मोर देन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो इसको हम 1 से करते हैं सब्ट्रैक्ट. नाउ 1 माइनस, अब आप देखिए 2.079 की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे कहां से? जेड टेबल से. नाउ हियर इज द जेड टेबल. 2.079 पर हमें जाना है. नाउ 2.079, दिस इज 2.0, दिस इज 2.0 and this is 7. तो 2.07 हम आए here. 2.0 आंसर क्या है? 0.980879. 9 थर्ड डेसिमल पॉइंट यहां से आप पिक करेंगे. सामने आइए, here it is 4.
इन सबको ऐड किया जाएगा, इन सबको ऐड किया जाएगा, तो रिजल्ट विल बी 0.9812. Result will be 0.9812. I am writing here 0.9812. 1 से subtract किया गया तो final answer is 0.0188. This is the question of normal. This is the question of normal.